Hello everyone, this is Anupama. Welcome to this Revit structural tutorial. So in this tutorial, we are going to model the 3D reinforcement rebars of footing and also do some detailing of that. We'll see the correct procedure and steps to provide the reinforcement bars in the structural members. Okay. So this is our structural plan. Okay. So I have converted my architectural plan completely into structural plan. Okay, and right now I have temporarily hide the architectural plan because we are going to work on the structural plan. Okay, so the first thing that we are going to do is that we are going to take a section of any of this footing. Okay, because in the sectional views we can clearly differentiate the rebars and understand it better. Okay, so let's start it. Okay, so first of all, go to view tab. In the ribbon bar, go to view tab, and from there select the option section. So we are going to create a sectional view, okay, of this structural plan, not exactly this structural plan, the footing. Okay, so first of all we'll take a section in one direction, and later on after that we'll take a section of in another direction. Okay, so just select the section. So I'm going to take the section of this footing, okay, in this direction. So repeat it down. So I have taken the section in the X direction. Okay, just remember that. So the section is in the face point. Okay, now just select the section and drag the view somewhat till the footing. Okay, so this is the range. Okay, this dotted line represents the range of your view. Okay, सो अगर आप इतना तक रखोगे इसको तो इतना तक आपका व्यूज़ दिखेगा सेक्शन में. अगर आप इतना तक रखोगे देन इतना तक आपका आएगा व्यूज़. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन. ओके, देन राइट क्लिक एंड जस्ट गो टू व्यू. ओके, so this is the sectional view. Okay, now what the next thing what I'm going to do is that I'm going to change the scale to 1:20. Okay, and keep it as fine level of detail. Okay, now I'm going to drag this box. Okay, just click this box and just drag it. हमें इतना नहीं चाहिए, we just want till here. Okay, so click this box and drag it out a little bit. ठीक है, you can do one more thing is that you can just select the box. You can hide the box from here, and you can also select these levels. Okay, right click, hide in view by category. Okay, सो ये आपका जो ग्रिड लाइन्स और लेवल्स है ये भी आपका हाइड हो जाएगा. ठीक है, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू बाय कैटेगरी. ठीक है, सो ये हाइड हो गया आपका. ओके, सो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फुटिंग एंड कॉलम्स. ठीक है, सो दिस इज द व्यू विच आई एम गोइंग टू डिटेल. ओके, दिस इज द कंप्लीट footing and column which I'm going to detail. Okay, so the first thing what we are going to do is that before placing the reinforcement, the first work what we need to do is that to provide the cover. Okay, so how to provide the cover? For that
go to structure, okay, select this, go to structure, and under the structural tab there is an option under reinforcement, that is the cover. So as soon as आपने cover select किया तो ये automatically आपका cover ले लिया है, ठीक है. So we can provide the cover in two ways, either by pick elements or by pick face, okay. Suppose अगर आपको ये जो covers हम यहाँ पर automatically हो गया, इसको अगर आपको एडिट करना है या फिर आपको अलग कुछ देना है यहाँ पर कवर, देन आप यहाँ पे जा सकते हो एडिट कवर सेटिंग, ठीक है. देन फ्रॉम हियर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और यहाँ पर आप इसको सपोज 40, ओके, तो सेलेक्ट इट, पिक एलिमेंट्स, ओके, जस्ट पिक एलिमेंट्स. तो आपका आपने जो अभी क्रिएट किया है दिस वन रिवर, आप जो ऐड करोगे यहाँ पर दिख जाएगा इन द ड्रॉप डाउन बॉक्स, ओके. सो दिस वन, सो आप देख सकते हो यहाँ पर 40 mm का आपका कवर लग चुका है, ठीक है. So this is the first work what we have to do, okay, and it is very important. And the next thing is that now we are going to assign the reinforcement, okay. Now I'll start placing the rebars, okay. So select the structural member, okay. So I'm selecting my structural foundation, that is rectangular foundation of 1800 into 1200 into 300 mm thickness, okay. So now select in the options called rebar, okay. So remember one thing that Revit structure में reinforcement और steel को हम लोग rebar का नाम दिया गया है, ठीक है. So rebar से ही हम लोग reinforcement को indicate करते हैं, ठीक है. So just click on that and now you can see in the right hand side there is a box called Rebar shape browser, okay. So from here we can select any whatever kind of shape you want, you can select from here, okay. But the first thing before placing the rebars is that you make sure to choose the rebar type from here, okay, from the property browser, okay. So what type of rebar type you want to use, you can select from here, okay. Under this shape browser here I want to use, so you can load any type of shape, but right now I want to use your Rebar shape 1E, okay. So just click on this. So अगर आपने क्लिक किया है इसको तो आफ्टर दैट क्या होगा कि देयर विल बी एन option here, that is modify place rebar, okay. So modify place rebar में यहाँ पर चार options बहुत ही important है, that is the placement plane, ठीक है. The other one is your placement orientation, then your rebar set, and there are more to other options, that is the rebar constraints and rebar set type. तो इतना यूज नहीं आता ये दोनों, but this three is very much important, that is the placement plane. तो यहाँ से मैं आपका place on current work plane you select कर रही हूँ, and from the placement orientation I am selecting parallel to the work plane, okay. So just select here. So आपका जो ये जहाँ आपको प्लेस करना है, तो कवर के नीचे आप जाएंगे तो इट विल वो नीचे ड्रैग नहीं होता है क्योंकि ये कवर ऑलरेडी ले लिया है. सो ये कवर सेट हो गया है. सो यहाँ तक कि आपका ये प्लेसमेंट होगा, ओके. सो अभी क्या करना है कि यहाँ पर एक सिंगल आपका रेनफोर्समेंट प्लेस हुआ है रीबार. सो हमें इसको कंप्लीट फुटिंग पे प्लेस करना है. तो कैसे करना है, जस्ट सेलेक्ट ऑन दिस, ओके.
सो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखेगा लेआउट रीबर सेट पे, ठीक है। रीबर सेट पे आपको यहाँ पर लेआउट चूज करना है। देन यहाँ पर स्पेसिंग, अगर आपको फिक्स नंबर रखना है देन यू कैन सेलेक्ट द फिक्स नंबर। You can place the quantity over here, whatever you want, 3, 4, 5, okay। अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग देना है, ठीक है, whatever spacing you want you can give from here, और यहाँ पर क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर नंबर विथ स्पेसिंग, आपको स्पेसिंग प्लस नंबर दोनों एक साथ यहाँ पर देना है, देन यू कैन प्रोवाइड फ्रॉम हियर, ओके। एंड द अदर ऑप्शंस इज मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग, ठीक है। सो बट आई एम चूजिंग द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमम स्पेसिंग, ठीक है, और मैं यहाँ से स्पेसिंग को चेंज करने वाली हूँ। सो आई एम प्रोवाइडिंग 200 mm स्पेसिंग, ओके। सो यू कैन सी दैट यह क्वांटिटी आपका दिखा रहा है 10 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, एट द स्पेसिंग ऑफ 200 mm, ठीक है। सो ये प्लेस्ड हो गया है यहाँ पर। सो वन मोर थिंग यू कैन डू दैट, आप यहाँ से इसका डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो। फॉर द प्रॉपर्टी बॉक्स, दिस इज द here you can change the dimension of the rebars, okay। So right now I'm not changing it, okay। So let's go to the 3D and let us see, okay। So let's make it wireframe, okay। So अभी हमें दिखाई देगा सही से the rebar placement, and let's make it 1:20। स्केल को हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है। So you can see over here that in this direction आपका ये बार्स प्लेस्ड हो गया है, ठीक है। आपको और एक चीज़ दिखा रही हूँ कि अगर आपको इसका ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप सेलेक्ट करके फुटिंग को, यू कैन गो टू द ओवरराइट ग्राफिक्स इन व्यू एंड सेलेक्ट फ्रॉम हियर बाय कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ से आप अपना ट्रांसपेरेंसी, सरफेस ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आप जितना इंक्रीज करोगे उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो हमें ये विजिबल हो जाएगा वही बार्स फ्रॉम हियर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था रिबार्स, तो ये दिख रहा है, ये ग्रेड स्लैब में मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। सो सी इट्स ट्रांसपेरेंट हियर, ठीक है। सो हम लोग इस तरफ देख लेते एक बार। मैं यहाँ दिख नहीं रहा है प्रॉपरली क्योंकि फुटिंग जो है इस बीच में है, तो यहाँ से अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट्स ओके। सो इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सरफेस ट्रांसपेरेंसी, और आपको ये विजिबल हो जाएगा आपका रीबार्स, ओके। सी हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि दैट
अभी हम लोग क्या करने वाले कि ये हम लोग ने एक डायरेक्शन पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, रेनफोर्समेंट रिवर्स। नाउ इन अदर डायरेक्शन दैट इज इन वाई डायरेक्शन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो देयर्स टू वेज। एक तो हम फिर से यहाँ पर स्टील फ्लोर में जाके आपका सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वाई डायरेक्शन पे सेक्शन लेके हम लोग आपका फिर से वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं रिबार्स। और another way what we can do is that हम लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट राइट क्लिक, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट सिमिलर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है, सो हमें चूज करना है सेम रीबार 1E, ठीक है। सो यहाँ पर अभी जो डायरेक्शन है प्लेसमेंट प्लेन एक ही होगा, करंट वर्क प्लेन, बट यहाँ पर जो आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इज perpendicular to the cover. Okay, we are going to select this. Okay. यहाँ पर हम लोग इसको मैक्सिमम स्पेसिंग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको 200 कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन प्लेस हियर। सो ये प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है। सो सिमिलरली आप इसका भी यहाँ से चेंज कर सकते हो डायमेंशंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी बॉक्स, ठीक है। थोड़ा अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ मैं इसको। फिर actually I don't want to view my reverse in this direction, in the y direction, in this way, okay. So to change the view what you have to do, that go to the still flow, okay, select it, and I'm going to drag it till here, okay, and now just go to view. So you can see here in this way it is represented, okay. सो अभी हमें ये रीबार्स को ऊपर लाना है। सो अभी कैसे कर सकते हैं कि जस्ट सेलेक्ट दिस रीबार, ओके। सो एज सुन एज यू सेलेक्ट इट, कम टू द रीबार्स एडिट कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो हमें इसका यहाँ पर जो वी हैव टू सेलेक्ट द एक्सिस। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको इन दिस, इस साइड पे है, तो हमें ये एक्सिस चूज करना पड़ेगा यहाँ पर। सो आई एम चूजिंग दिस वन, ठीक है। देन क्या करना है हमें यहाँ पर मैं -0.01, ओके, जस्ट एंटर एंड जस्ट नाउ फिनिश इट। सो आप देख रहे हो इन दिस वे हमारा रिबार्स ऊपर प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। सो एक बार 3D में देख लेते हैं, ठीक है। So in this way it is placed, okay. Now what I'm going to do is that I'm going to place the rebars in this column part also. So I'm going to take a section of this first of all. So come to this view and take a section, ठीक है। So हम यहाँ से section लेने वाले इसका,
I'm going to change it towards downwards, flip the section. Okay. Now what I'm going to do is that I'm going to drag this till here. इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है. Now just go to view. स्केल में चेंज कर लें. तो आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेनफोर्समेंट प्लेस कर दिया है इन बोथ द डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. अभी मैं प्लेसमेंट करने जा रही हूँ stirrups in the columns. Okay, select this column, then go to the reinforcement and select the rebars. Okay, so now I'm going to select the rebars from here. Make sure to select the rebar type. I'm selecting the 80. Okay, and from here I'm going to select the rebar shape. Okay, so I'm going to select this rebar shape 6A. Okay, then now placement plane, current work plane, parallel to work plane. Okay, now you can place here. So it is placed. Now select the verb. We are going to make it maximum spacing and spacing of 150 mm. It is spacing of 150 mm. Okay, now I am going to place some perpendicular bars over here. So how to do that? Select this column, again go to rebars. Now I'm going to select 12 mm bar, and from here I'm going to select the rebar shape 1A, or you can select this also, but I'm selecting this rebar shape 1A. ठीक है. Now from the current work plane it will be same placement. Here it will be changed to perpendicular. ठीक है. So I'm going to here in the rebar set I'm going to select as fixed number here. I'm not going to select the maximum spacing over here. I'm going to select the fixed number. So I'm going to give the quantity of 2. Okay, so if you move your cursor in this way, then it will be placed in this way, and if you place your cursor here, then it will be placed in this way. Okay, so it is placed here. Now do one thing, that zoom it out, select it, and just move it. Okay, zoom it out, select it, and just move it. Okay, now come to the section. Here select this bar
Okay, and go to edit sketch. Okay, I'm going to increase its length. Now pick lines. Few 0.5, 500. Just make it 0.3. 0.4. Okay, now just finish it up. Finish it. Now what I'm going to do is that I'm going to mirror it out. Just select it, press in your keyboard and just select the axis. So it is done. So ये आपका mirror हो गया यहाँ पर. So now I'm going to move this bar. Let me drag it and move little downwards. Okay. So remember one thing, we cannot drag this. Okay, because it will show the different bar mark. Okay, so what we have to do that we have to select this and we have to delete it. Okay, then select this, type okay, just this is the axis. So you have to do in this way, otherwise it will show the different bar marks. Okay, so what is bar mark, I'm going to show you that. Okay, so the next thing, you can also bring the stirrups till this point if you want. Okay, so the next thing is the annotation, how we can do the detailing and the annotation of this footing. Okay, so what you have to do is you have to go to the annotation tab and from there select the tag by category. The shortcut for tag by category is TZ. Okay, now as you move your cursor, it automatically takes the tag for different elements. Okay, for different categories automatically it takes the. So here let me select this bar and let me tag this. Okay, now click on modify and I need to change its placement. Okay, now you can, this detailing regarding this rebars you can change it. Okay, like go here to properties and you can change like quality. There are different types of rebar tagging. Okay, there are different types, so let me show you one by one. The first one is your quantity type and number. Okay, this is the quantity, number and type. Okay, the next one is your quantity type, spacing, number, one line. So it will show in one line. Okay, then the two line,
ठीक है. And type and number. This is the type and the number. Next, type, spacing and number. So this is the type, spacing and your number. So whatever you want, whatever is suitable for you, you can do. Okay. So let me select this. So here, let me show you. This 7 is representing the number of bars. Okay. Then this 10 is the type or grade of steel. ओके. अगर यहाँ पर आपका टी होता दैट मीन्स द डिफॉर्म्ड बर और फॉर्म्ड बर. ठीक है. देन दिस एट द रेट 200 दिस इज शोइंग द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. ओके. बिटवीन द बार्स. ओके. And this is your bar mark. Okay. This 13 is representing your bar mark. Okay. So similarly you can tag all others rebar here. So let me show you the other types as well. Mm, Go to annotate, tag by category. Now select the leader here and then attached end or free end. You can select from here. So I am selecting the free end. ठीक है. अभी मैं इसको select कर रही हूँ. I am ठीक है. So यहाँ से आप इसको change कर सकते हो. The type. Okay. So you can see this is the type of bars, the spacing and the bar mark over here. Okay. Now I'm going to annotate my this bar. Annotate by tag by category. Then now leader free ends. So you can tag this rebar. Okay. Let me hide this sectional view. Yeah. Now let me select the stirrups. Okay. So अगर आपको stirrups को सिर्फ बीच में दिखाना हो, you don't want to show till the end of this point, okay, whatever, then you can select from here. If you show middle, then it will show only the middle one. Show first and last, it will show the first and last one. Show all,
then it will show all the bars over here. Okay, so I'm showing it all. I'm selecting show all. Let me tag these as well. Showing the size. Check the category. So यहाँ पर 80 दिखा रहा है तो T here is the deformed bar. Okay, and 14 here is the your bar mark. Okay, so now let me, if you want to add some text or you show some dimension over here, then you can show the dimension as well. So in this way you can add the dimensions and do the detailing. Fine. Shade it. Realistic. So let's go to the 3D. So you can see. So this is how you can do the detailing of the reinforcement rebars of the pad or the isolated footing. Okay. So guys, if you would like to see more of this type of tutorials and lessons in Revit structure and learn the different tricks and techniques, then do like and subscribe our channel. And if you are interested in learning the Revit structure course in complete detail with live projects at industry level, then you can definitely check out our official application and go through it once. You can also use the code ROY33 and get a handsome discount offer on any of the above courses. So guys, what are you waiting for?
Just go and grab the opportunity without delay. Thank you.